एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की जो कुछ वर्कशीट्स हैं जो मैं लाई हूँ ये हैं वावल साउंड्स की, शॉर्ट वावल साउंड। और ये नॉर्मली क्लास एलकेजी या यूकेजी, बेसिकली यूकेजी में पढ़ाया जाता है। एंड इसमें मैं 4-5 शीट्स लाई हूँ। ये स्टार्ट करने से पहले आपके बच्चे को पता होना चाहिए कि बेसिक वावल्स क्या होते हैं, जो कि होते हैं ए, ई, आई, ओ एंड यू। तो बच्चों को पहले से मैं अज्यूम कर रही हूँ कि ये पता होगा, उसके बाद ही वो ये वर्कशीट्स कर सकता है। तो ये जो फर्स्ट वर्कशीट है, जैसे आप देख सकते हैं, शॉर्ट वॉवल ए साउंड का है। ए से साउंड आता है ए। तो इसमें कुछ पिक्चर्स हैं, क्योंकि बच्चे जो है पिक्चर से ज़्यादा अच्छा समझ पाते हैं हर चीज़, एंड उनके लिए थोड़ा इजी हो जाता है हर चीज़ समझना और उसको करना। तो कोशिश करें कि स्टार्टिंग में बच्चों को आप पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से ही वर्कशीट सॉल्व करवाएं, तो उनके लिए ज़्यादा इजी होता है। तो ये है शॉर्ट वावल ए। यहाँ पे बच्चों को वावल इसमें बीच में भरना है, और ये ए साउंड वाले 3 लेटर वर्ड्स हैं। तो ये है हैट। तो यहाँ पर बच्चा भरेगा HAT, ह ए ट। तो ये साउंड से करवाना है बच्चों को, ह ए ट हैट। प ए न पैन, क ए ट कैट, ट ए प टैप। तो इस तरीके से बच्चों को ये भरना है, फिल करनी है शीट। Okay, so this is short vowel A sound. What is this, Shaurya? Hat. Okay, so what will you write here? क्या लिखोगे इधर? Her at the. Can you write it? Her a. Okay, write it. You have to write capital A, okay? Because this is capital T. Okay, where is the rubber? All in capital. Okay. Yes. What is this? Pan. What is this? Pan. So what will you write here? P. Per at the no. What is it called? Pan. Correct. Okay. What is this? Cat. Go at the. Okay. Can you write it? What is this? Tap. Tap. Go the apple. Correct. Okay. What is this? Bag. Bag. Bo at go. Okay. Can you write it? Yes. What is this? Pat. Bo at the. So this will be uppercase, right? Yeah. Good job. ये दूसरी जो वर्कशीट है वो शॉर्ट वॉवल ए वर्ड्स की है। एंडिंग साउंड ए ट एट है, वो है। तो आप ये 2 तरीके से करा सकते हैं, या तो आप इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करें साउंड को, ब ए ट बैट, या फिर ब एट, या तो उसका ए टी का साउंड आप एट बताएं। तो दोनों ही करेक्ट हैं। 3 पार्ट्स में भी आप इसको सेगमेंट कर सकते हैं, या फिर इसको एक साथ सेगमेंट कर सकते हैं। दोनों ही तरीके से आप करवा सकते हैं, जो भी आपके बच्चों को इजी लगे समझने में। तो ये एट फैमिली के वर्ड्स हैं। तो इसमें बच्चे को क्या करना है, एट, उसको ऑलरेडी साउंड अगर आती है, नहीं भी आती तो एट यही बोलना है, और इसको कंबाइन करके यहाँ पे उसको वर्ड बनाना है। तो जैसे ये हो जाएगा ब ए ट, तो यहाँ पे इसको लिखना है ब ए ट, और साथ में बोलना भी है बैट। तो ये ज़रूर बुलवाएं बैट, तभी उसको याद होगा कि ये क्या वर्ड है। तो ब ए ट बैट, फिर सी ज्वाइन करके क ए ट कैट, फ ए ट फैट, ह ए ट हैट। तो सिमिलरली ऐसे ही ये सारे वर्ड्स बनेंगे जो कि शॉर्ट
short vowel words हैं. So this is at. Okay. So you have to combine this with this and you have to write it down. Okay. So what is this? This is B A T is Bad. bat. Okay, you have to write it down here. Can you write it here? Yes. A T What is this called? Bad. Okay, now what will be this? G A T is cat. Okay, write it down. Okay. Now, what is this? F. What is the sound? For Huh. A T is U. What is it? Yeah. Fat. Fat. Say again. Fat. Say again. For at is fat. Say that. For A T is fat. Okay. Can you write it? Okay. For at fat. Right? Fat. Now, what is this? What is the sound? Her. Her. A T is hat. Yes. Can you write it here? Okay. Okay. What is this? Sound? What is the Mo. sound of this? Mo. 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 Mm. Mo. Yeah. A T is Is mat. Correct. Yeah. Next one. What is the sound of this? R. R A T is is rat. correct. Okay. Now, what is this? The next one. Pencil. S. पकड़ो. What is the So- sound? Okay. A T is sad. Correct. Can you write it down? Okay. ओके. अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है इसमें बच्चे जो है सर्कल करेंगे वावल्स ढूंढ कर. तो इसमें जो भी है वावल्स ए ई आई ओ यू जो भी है बच्चे आइडेंटिफाई करेंगे, उसको सर्कल करेंगे. सबको समझ आ जाएगा कि बच्चों को सारे वावल्स लर्न हुए हैं या नहीं हुए हैं. तो ये लर्न करने का एक आसान तरीका है. और या फिर इसको और इजी बनाना है तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं सर्कल वावल्स ए ई आई ओ यू. यहाँ पे लिख भी सकते हैं ताकि बच्चे उसको देख के इसमें सर्कल करें. और अगर उसको ऑलरेडी वावल्स पता है तो आप ये एक्सरसाइज उसको दे सकते हैं. नाउ शौर्या, यू हैव टू सर्कल. Next exercise is you have to circle all the vowels. Do you know what are the vowels? Yes. Can you tell me 5 vowels? Can you A. just tell me first, okay? What is it? A E I O Yeah. and yeah they have What is it? U. Correct. So, can you just circle? Find the vowels and circle them. Circle, 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 circle. There are more vowels. Can you find them, please? Can you Yeah. just check each and every एक word, know. एक letter check करो. Okay.
Yes, very good. There's one more. Yes, good job. So these are all vowels, right? नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है ये मिक्स वावल्स दिए मैंने. जो पहला वाला एक्सरसाइज था वो खाली ए वावल का था और नेक्स्ट वाले में सारे वावल्स कवर हो जाएंगे. ए ई आई ओ यू. अगेन मैं पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन यूज़ कर रही हूँ क्योंकि बच्चों के लिए ये ईजी रहता है लर्न करना, सीखना इससे. तो जैसे कि ये है क अ प कप, तो यहाँ पे उसको यू का साउंड उसको पता होना चाहिए. तो ए का साउंड है ए, ई का साउंड है ए, आई का साउंड है ई एंड ओ का साउंड है ओ, यू का साउंड है अ. तो शॉर्ट वर्बल्स में ये साउंड्स रहते हैं. तो यहाँ पर उसको क अ प, तो यू यहाँ पर फिल करना है. न ए ट नेट, ब ए ल ल बॉल. तो यहाँ पे उसको सारे वर्बल्स फिल करके इसको वर्ड्स को कंप्लीट करना है. Let's do this exercise. You have to fill all the vowels, whatever comes in it, okay? A here. Okay, 1 minute. What is this called? Tell me. Cup. Cup. So what is this? U here. So what is the sound? Ka, K A p. P So O a sound comes from which vowel? U. Yes. You can write small u. Yes. Now, what is this? Net. Net. So what will come here? No. A. Is it a or e? E. Yeah. No, e. What is Ta. it? To. So what will you write here? Net. A. E. E, correct. Okay. So what is this? B. Huh. Just say it. B. Hmm. Yeah. A. Huh. L. L. Yeah. So what is it called? Ball. Ball. Can you write it here? Yes. What will come here? Yeah. Yes. What is this? Yog. Log. Correct. So what will come here? L. Hmm. A. No. Is it a? No. Then what is it? A. Oh, correct. La. Go. O. Go. So what will come here? E. Which? O. Yes, correct. Okay. What is this called? Lips. Lips. Correct. So what will come here? L. Hmm. E. E. Hmm. P. S. Hmm. Lips. So what will come here? I. Yes. Good job. अभी नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बच्चों को बहुत मज़ा आता है ये सब करने में, जो कि है वर्ड सर्च. तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट वावल वर्ड्स दिए हुए हैं और उसको जो है जैसे ये एट कैट है, आप चाहिए तो यहाँ पे पिक्चर भी ड्रॉ कर सकते हैं कैट की, ताकि वो इजीली इसको पढ़ पाएँ और इस चीज़ को कर पाएँ. और अगर उसको ऑलरेडी पता है, अगर ये सब एक्सरसाइजेस करने के बाद उसको ऑलमोस्ट पता चल ही जाएगा कि ये कैट है, तो उसके बाद उसको इसमें फाइंड आउट करना है, वर्ड सर्च में फाइंड आउट करना है कि कैट किधर है. क एट अ कैट, CAT कैट. तो वो यहाँ पे एक एक वर्ड ढूंढेगा, उसको बोलो रो वाइज. तो मैंने पहले इजी बनाया है, मैंने जो है ये कॉलम वाइज नहीं, खाली रो वाइज किया है. तो एक एक रो में एक एक वर्ड है, उसको ढूंढना है. थोड़ा इजी रहेगा बच्चे के लिए, क्योंकि वर्ड सर्च आप डिफ़िकल्ट भी बना सकते हो. डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा शुरू में रखेंगे तो बच्चे को इंटरेस्ट नहीं आएगा. आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी, कॉलम वाइज भी, क्रॉस ऐसा इस तरीके से भी कर सकते हैं, बट मैंने नॉर्मली रो वाइज रखा है. तो क एट अ कैट, उसको ढूंढना है इसमें CAT. अगर आपको और ईजी करना है तो आप इसके सामने वाले लाइन में ही सेम वर्ड दे दें तो और ईजी हो जाएगा. PAN पैन, PAN पैन. और इसको सर्कल करना है या कलर भी कर सकता है, जो भी उसको अच्छा लगे. So Shaurya, what are these words? Can you tell me? What is this? K. Hmm. A. Hmm. T. Cat. Correct. What is this? P. Hmm. A. No. An. What is this? L. Hmm. A.
Yog. Hmm. B. Hmm. 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 Bus. Correct. So now you have to find these words in this. Okay. Can you Okay. find where is at a cat in this? And you have to Okay. circle it. Okay. Find cat? Yes. Oh Yes. wow, you found it. Good job. Where is pan? And a pan in this? Correct. Then next one is log. Log. Yog. Where is log in this? Log. Good job. Where is bus in this? I know. Good job, Shaurya. और ये सब एक्सरसाइजेस के बाद एंड में मैंने शॉर्ट वॉवल रीडिंग करी है जो कि लेटर ए की है, तो इसको रीड करेगा बच्चा। तो क एट अ कैट, प एट अ पैट इज क एट अ कैट, फ एट अ फैट, क एट अ कैट, प एट अ पैट इज अ फैट कैट। तो जैसे आप देख रहे हैं फर्स्ट सेंटेंस छोटा सा है, फिर उससे थोड़ा बड़ा किया एंड उसमें कुछ वर्ड्स और इंट्रोड्यूस किए और लास्ट वाले में ऑलमोस्ट सारे ही वर्ड्स इंक्लूड कर दिए हैं। तो ये छोटी छोटी एक्सरसाइजेज आप करवा सकते हैं। तो इसमें जो है बच्चे की रीडिंग एबिलिटी भी बढ़ेगी और वो थोड़ा रीड करना भी स्टार्ट करेगा जब वो ये सब देखेगा। तो इसमें मैंने एट वर्ड ही लिए हैं जैसे आप देख सकते हैं। Shaurya, we will read this. Okay, it's finished. We will read this, okay? So, start reading. What is this? Say a. K at a Cat. cat. Yes, a cat. Say a cat. A cat. Okay, so what is this? P at a That is is a. a What is this? cat. Correct. A fat cat. Pat is a fat cat. करेक्ट। तो ये थी मेरी कुछ एक्सरसाइजेज आज के लिए शॉर्ट वॉवल साउंड्स के लिए। आई होप आपको पसंद आई होंगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिले। एंड प्लीज़ अगर नया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए क्योंकि एक एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत जाती है। अगर आपको ऐसे ये वैल्यूबल लगता है तो प्लीज़ कम बैक फॉर मोर। थैंक यू।